guys, Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Happy Chirp. Today I have with me Jugnoo Kazmi, who happens to be a lawyer by profession. There's a lot that she's doing in the field and especially for women. But let's discuss that over this conversation of what she's done and what she wants to do and continues to do while in this profession. Ye interesting isliye hai because I haven't had a women lawyer on the show before, and this is the first time that we're having that. So isliye I'm very excited and interested to know and actually want to explore this deeply, okay, what being in this profession as a woman is like, and obviously other areas of Jugnoo's life. So how are you, Jugnoo? I'm very well. Thank you, Hamna, for having me on your show. Thank you for coming. Thank you for taking out the time. So I want to start from, your early life. Yeah. Where were you born and raised? I was born and raised in Islamabad. So through and through, I am an Islamabadi. Right. I don't know if that's a good thing or not. I'm very happy about it, but yes, yeah. Often get made and fun of. Have you ever been around ये होता है ना कि अच्छा you were born and raised here, but then you moved to another city or so in Pakistan, or have you always just had your entire education here, everything here? So I was here, but for law school, both undergraduate and postgraduate, I moved to the UK for 4 years. But within Pakistan, I haven't. So it was like Islamabad to UK. Yes, Islamabad to UK. So I haven't done Lahore, I haven't done Karachi, other cities, and I'm the only family member who hasn't done that. Okay, and what was your life like growing up here in Islamabad? It was good. I was a nerd. And I don't know, I think I regret that a bit. I should have lived my life a bit more as a student in high school or middle school. But it was very good. I had still have a very nice family, very supportive parents. I have a sister. So I wanted to be a lawyer, and my father really encouraged me to, be a lawyer. Beach mein I detracked a bit, and I thought to myself, why not, become a pilot? But then I think I had to be realistic. So then back to law. Yeah. And where did you get your education from, like your early education? So I was here in Islamabad, so I went to Head Start, I went to Frobels, but I graduated from Head Start. Achha. And then after that, I went to the UK. So A-levels आपने Head Start से जी वहीं से graduate किया. Right. And when was it that you decided कि अच्छा मैंने law ही करना है? I think A-levels में क्योंकि उससे पहले भी थोड़ा आइडिया था, बट A-levels में एक प्रेशर आना शुरू हो जाता है. आप स्टूडेंट काउंसलर्स से मिलते हैं, करियर काउंसलिंग स्कूल्स जो ऑफर करती हैं उसके पास जाते हैं. यू बिकम सीरियस बिकॉज देन यू टेक योर सब्जेक्ट्स एज सच कि आगे क्या करना है. तो वैसे तो ओ लेवल से बनना शुरू हो गया था जहन, मगर एक्चुअली बचपन से मेरी वालदा मुझे बताती हैं कि थोड़ी सी मैं इंक्लाइन थी. आई डोंट रिमेंबर, आई वाज टू यंग. वो कहते थे कि क्या बनना है, तो मैं कहती थी माय योर ऑनर बनना है. आई डिड नॉट नो कि जज कहते हैं, वो मैं मे बी मूवीज में देखती थी योर ऑनर कहते हैं. तो मैं कहती थी वो बनना है. बट वो आइडिया फॉर्म जो है ओ लेवल्स, लेट ओ लेवल्स, ए लेवल्स में हुआ. Okay, so what is it about law that moved you or inspired you that you said, okay, this is what I want to do? I think there were a lot of things. My mother's experience played a huge role. My mother was a government servant. She worked for the national television, but she made a lot of documentaries on women's rights and children's rights. So वहाँ से कहीं, even though she didn't instill it in me, but it was part you of absorbed it. I absorbed it. परवरिश, माहौल. फिर मुझे इवन दो शी सेड मुझे कहा उन्होंने कि अगर तुम हाउ अबाउट यू गो फॉर फिल्म मेकिंग. आई सेड नो, आई वांट टू डू लॉ. इवन दो माई व्हाट आई एम प्रैक्टिसिंग राइट नाउ इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वुमेन्स लॉज, ओनली वुमेन्स राइट्स, बट लॉ इज सो वास्ट. आप हर कुछ कर सकते. कहीं ना कहीं इंसानी हुकूक तो निकल ही आते हैं. और काफ़ी ख़वातीन के अलावा भी वी हैव सो मेनी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, तो उनके भी हुकूक. तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा हुआ. फिर लॉ मुझे पढ़ने लिखने का शौक था एक्चुअली. आई नेवर लाइक्ड मैथ्स. नॉट दैट कि अगर मैं मैथ्स में अच्छी नहीं थी या मुझे मैथ्स नहीं पसंद तो मैंने सोचा कि मैं लॉ ही करूं. शौक था मुझे. किताबें पढ़ने का शौक था, और ये थोड़ा सब्जेक्टिव है तो मज़ा आता था लिखने में. Yeah, a bit like
academic. Yes, absolutely. So वो ही होता है कि कुछ जिनको पढ़ने लिखने का शौक हो वो लॉ करते हैं, लिटरेचर करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, because you know, I get that. So and then when you, so आपने A levels में law choose किया? नहीं, I didn't do law. अच्छा, why? I don't know why. I took very random subjects. I actually did not do law. And हाँ, मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि no, you don't need it if you want to do it. हाँ, you don't. It's not a prereq. It's not a prereq. और first year में जो आप पढ़ेंगे, और वो वाकई सच है क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ, तो जब मैंने first years को पढ़ाया तो जिन्होंने law पहले नहीं पढ़ी हुई थी A levels में, उनको कोई ख़ास नुकसान नहीं हो, because वो हमेशा scratch से लेके जाते हैं. Okay. तो law is, do you think it's a difficult पढ़ाई? It's very interesting in Pakistan. Worldwide it is, but Pakistan में standard of legal education is unfortunately pretty low. It's easy to become a lawyer, to study law, but once people, or you know, जो law पढ़ा होता है, वो when they enter profession they realize it's a very rigorous profession. तो वो फिर उसमें ना काफ़ी there's a gap. जो बाहर नहीं होता. देखिए अमेरिका में तो अंडरग्रेजुएट डिग्री भी नहीं है लॉ की. अच्छा. हाँ, यू डू अ मास्टर्स और यू डू द JD और फिर SJD जूरिस डॉक्टर बनने के, जो कि 3 साल का होता है. इंग्लैंड में, UK में है और दूसरे ममालिक में है, मगर वहाँ स्टैंडर्ड है बाकायदा. यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है. फिर जब मुझे अफसोस भी होता है क्योंकि फिर जब लोग स्टेप इन करते हैं प्रोफेशन में, एक धचका लगता है उनको, क्योंकि इट इज़ अ रिगरस प्रोफेशन. सो इज दैट द रीज़न व्हाई यू चोज टू did you know this before, that is why you chose to do your law from abroad, or was it always कि अच्छा बाहर जाके पढ़ना है जो भी होगा? बाहर जाने का इतना तो नहीं था. There was an idea. My mother really wanted me to go. I had gotten into LUMS. मैं तो LUMS की फी भी दे दी थी. अच्छा. Then last minute my mother said no, you know, you should go abroad. अच्छा, she wanted to send you abroad. Yeah. And then of course my father as well. And before, the funny thing is, before I went for my bachelor's of law, my father said वापस नहीं आना जब तक बार ना कर लो. तो मुझे पता था मैंने बार करना है, मुझे पता था मैंने किस इन जाना है. Being a Pakistani, every parent wants that their child goes to Lincoln's Inn. अच्छा. Even though I did like some other inns. Okay. But I did not have a choice because some things of course you do for your parents. Yeah. तो वो किया. So मेरा तो लम्स का एक जहन बन चुका था. बट फिर मेरी वालदा ने ये भी कहा कि देखो 4 साल में यू वुड बी एबल टू डू 2 degrees. You know, parents think differently also. And I think that was the best decision of my life, even if I did not make it. अच्छा. Because I think बाहर पढ़ने तो पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी, फिर एक्सपोजर भी आपको काफ़ी मिलता है. तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड. अगर नहीं भी कर सकते, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ भी हो सकता है. मास्टर्स में काफ़ी लोग जाते हैं, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं. आई थिंक दैट्स ऑल्सो प्रीटी excellent. Even if you don't go, it's not a determinant कि you won't be successful because you've not had a foreign education. No, it all boils down to hard work, which is something that people don't understand, because एक आपके साथ हो जाते हो foreign graduate हैं, which is why they're getting opportunities. Yes, you may be able to get your foot in the door, but it all boils down to your hard work. I have seen the best lawyers in Pakistan, Hamna, have been locally educated. It's about what's in you. Absolutely. Yeah. It actually takes that. Yeah. The hard work and the sort of the drive, I guess. Drive is very important. और but difficult profession है, तो to keep that driving, there are days when you don't want to practice a profession. इतना rigorous है, testing है, patience चाहिए होती है. But if you're able to go through that or pull through that, nothing better than it. तो फिर to have that drive is also very very difficult but very important. हाँ. So then आपका experience getting an education abroad, what was that like? It was very good actually. The one thing that I like about abroad or the education over there is that you have a lot of चॉइस. आपको यहाँ थोड़ा सा, जब मैं पढ़ाती थी तो मैंने नोट किया कि रिस्ट्रिक्टेड ज़रा मॉड्यूल्स है, बारिंग सम स्कूल्स. फिर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर पे उनका बड़ा ध्यान है. सो यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू डू वर्क एंड नॉन वर्क, एंड लॉट ऑफ क्लब्स दैट यू कैन जॉइन, जो आपको एक थोड़ा सा ना ऑल राउंडेड पर्सनैलिटी दे देते हैं. अगर ना भी दें तो आपके पास यू हैव समथिंग टू डू बिसाइड्स स्टडिंग. तो वो है. And one thing that I really like about the Goras is their work ethic. They have a brilliant
वर्क लाइफ एंड पर्सनल वर्क लाइफ बैलेंस, हाँ. और फिर उस पे भी they would excel and you're like how do you do it, but that's the training they get from schools, क्योंकि वो पढ़ते भी हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर भी करते हैं, स्पोर्ट्स भी करते हैं, घर आते हैं, होमवर्क भी करते हैं, और सब उनकी ज़िंदगी का ना सही सब चल रहा है. I personally think that this boils down to living a disciplined life. Yes, because जब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होता है ना, so then you can do much more. Absolutely, like when you live your life more mindfully and with discipline, that okay, like you know, and not in a sloppy way. You know, जब डिसिप्लिन हो के मैंने टाइम का डिसिप्लिन हो, उसकी वैल्यू हो, और भी बहुत सारी चीज़ों का डिसिप्लिन हो, तो फिर then you tend to be able to find that balance. और वो उनको बहुत जल्दी, आई थिंक उनकी इस तरह, उससे भी ज़्यादा उनकी ना एक बहुत अर्ली ऑन उनको समझ आ जाता है हमारे गोल्स क्या हैं, या वो गौर व फिक्र करते हैं, इस पे फोकस्ड रहते हैं. हमारे जो काउंटर पार्ट होंगे, दे वुड बी अ लॉट मोर सर्टन एंड श्योर ऑफ व्हाट दे वांट, व्हिच इज ओके. आई मीन आपको 17 साल की 18 साल की उम्र में अगर नहीं पता कि क्या करना है, दैट्स फाइन, बट वो काफ़ी वो होते हैं, देन दे स्ट्राइव फॉर इट. दैट्स, एक तो होता है चाहना किसी चीज़ को, फिर होता है टू स्ट्राइव फॉर इट. द रियल डील इज स्ट्राइविंग, राइट? जितना आप कर सकते हैं उतना तो करना चाहिए, एंड द रेस्ट इज अप टू डेस्टिनी. Yeah, that's true. Yeah, that's a very valid thing to say. So the work ethic was, do you think actually, what are some things that you would say if you reflect right now, okay, because of getting an education wahan par, because of the environment there or opportunities there, then this is besides like law, what did you think that you learned, or things that helped you grow as an individual, personal growth, by living away from home, by getting an education abroad, by interacting with, you know, a diverse kind of people. Especially, and I'm asking this because pehle you were in Islamabad, and in a very small bubble where all the people are the same, you grow up with them. So it's like, you know, you're pushed out of your comfort zone in a very, from a small bubble to a much bigger. So how did that... Yes, that's actually a very good question. I wasn't even 18 yet, and मुझे अंडा भी नहीं बनाना आता था ना. मुझे एक चाइनीज़ फ्लैटमेट ने हेल्प किया जब मैंने एक अभी आई थिंक तवा में वो तेल गर्म नहीं हुआ था, तो मैंने अंडा उसमें डाल दिया, फिर वो फटना शुरू हो गया, तो मैं उछल के ना पीछे चली गई. तो उसने वो आई और उसने मुझे हेल्प किया. आई थिंक सबसे बड़ा जो टेक अवे है वो कॉन्फिडेंस आप में बहुत आता है. एंड वो मैंने ट्राई नहीं किया, बट if I look back and introspect, और मैं थोड़ा सा ज़रा पॉन्डरिंग करूँ, रिफ्लेक्ट करूँ, तो मैं one thing that I would say is, क्योंकि वो एक्सपोजर होता है, आपने जैसे बात की डाइवर्सिटी है, वहाँ कॉन्फिडेंस आता है. अकेले आप रहते हैं, आपको पता है यहाँ आप you're not daddy's princess anymore, तो आपने खुद अपना एक बजट है आपको जो एक फिक्स दिया गया है, उसमें ही गुजारा करना है. कपड़े धोने हैं, खाना पकाना है, ग्रोसरी करनी है, खाना अगर ख़त्म हो जाएगा तो कोई आपको ला के पका के देगा नहीं, आपने खुद करना है सब कुछ. तो वो आई थिंक एक, अगर यंग एज में वैसे भी आप इम्प्रेशनेबल होते हैं, मोल्डेबल होते हैं, हो जाए तो बहुत अच्छा है. उससे आपकी ज़रा आप थोड़ी अपनी लिमिट्स में रहते हैं और औकात में रहते हैं. तो विच इज़ वाई आई ऑल्सो थॉट कि वो लाइफ ओवर है सो टफ, बिकॉज यू हैव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ. वी आर सो ब्लेस्ड, और द वंस दैट आर, आई मीन आई कांट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों के चैलेंजेस होते हैं, मगर जो है तो वो अच्छा है कि इस तरह आप इंडिपेंडेंटली रहें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक तो रहना आ जाता है और फिर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है. यू कैन ऑपरेट योर सेल्फ इन द वर्ल्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बैंक चला आप सब, यूड रिलाई ऑन समबडी, योर गार्डियन और योर पेरेंट और समबडी ओल्डर टू यू, कि बैंक का काम कर दें, या छोटी मोटी चीज़ें, खुद सिम लेनी है, खुद बैंक का काम करना है, खुद यूनिवर्सिटी का काम करना है, एवरीथिंग. एंड when you like think, when you really think about it, they sound like small things, but they're actually a huge part of making you grow. Absolutely. And right, like वो जो the confidence that you said, वो इसी चीज़ में confidence आता है कि यार I can look out for myself.
Yes. And it's a very liberating feeling where you feel like you don't need to depend on anyone. Yes. And you realize that you can actually do it. Because शुरू में you get cold feet. You're very worried कि मैं ये कैसे करूँगी या मैं कैसे करूँगा. मैं तो आज तक नहीं. You know, if I could make an egg and by the end, ठीक है मैं कोई master chef नहीं बनी, मगर मैं अंडे तो अच्छे बना लेती थी. ये मुझे पता है. If anything, I survived for 4 years. खाना तो खाया था तो मैं जिंदा रही 4 साल के लिए, तो वो हो जाता है. It's really not the end of the world, but to have that confidence in yourself, I think that is essential. क्योंकि जब तक आप में confidence नहीं आएगा, आप आगे बढ़ नहीं सकते. I think you need confidence for everything. Everything. You can know everything, but if you don't have the confidence that you know everything, it's just going to lie there inside of you. Absolutely. Then you're not up. Then you are closeted in whatever the skill you have. If you're not convincing to yourself, then you're not convincing to other people. So you know, it's a double-edged sword in that sense. That makes sense. Okay, so I have a question. Can you tell me a bit about, so what happens is कि when you move away from your family और आप अलग से जाके रहते हो और आपकी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आती है, आपके डे टू डे एक्सपीरियंसेस होते हैं और ग्रोथ होती है जो आपकी फैमिली नहीं देख रही होती है. सो व्हेन यू कम बैक, यू आर अ वेरी चेंज्ड पर्सन in small and big ways. So how is it to move back home and how is it for the family and for you as well? कि वो कैसा एक्सपीरियंस होता है? शुरू में तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, खाना पक के आ रहा होता है, इवन तो आपको आदत होती है, बेड आप उठ के बेड बना रहे हैं अपना, यू नो, ऑल दैट. बट फैमिली ऑफ कोर्स इज़ वेरी हैप्पी टू हैव यू बैक. बट बाद में जब स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एंड देन यू सी कि सो द थिंग विद द यूके एज आई मैंशनड अर्लियर, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, तो यू ऑल्सो गेट टू डू लिटिल स्टिंट्स एट, यू नो, जैसे अगर आपने मेरे उसमें कोई इंटर्नशिप कर ली, कोई काम कर लिया, कोई प्लेसमेंट कर ली, और उसके अलावा भी आपको एक अंदाज़ा हो जाता है एक मुल्क के सिस्टम का कैसे चल रहा है. जब आप उस सिस्टम को अपने सिस्टम के साथ कंपेयर करते हैं और इनएडवर्टेंटली, तब थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके मुल्क में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट बिकॉज ऑफ certain things सिस्टम इतना पीछे है या यू नो बेहतर हो सकता है कि वो हुआ नहीं है. और वो देखें, और इतनी कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, करने पे आए तो हो सकता है, और देखें अच्छे सिस्टम के फ़वाइद क्या होते हैं जब आप दूसरे, यू हैव समथिंग टू कंपेयर इट विद, राइट? It's good and it's a bit painful also. Yeah, I guess it's painful for you, but knowing it is good. Yes, it is good because then, see, and which is why I came back also, because I was like, नहीं, brain drain नहीं करना, पाकिस्तान का वापस आना है, वो वाला, you know, उसको I have to make that change here. हाँ, apply करना है. वो वैसे bubble, I'll be very honest, I won't mince my words, burst होता है आपका. कभी कभार दिन आते कहते हैं हाँ हो सकता है कुछ, बट ज़्यादातर ऐसे दिन होते हैं जब आप सोचते हैं कि नहीं हो सकता, बट फिर एक दिन आता है जब आप सोचते हैं, आप कर भी जाते हैं और वो आता है. बट एक कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए होती है, और वो एफर्ट काफ़ी मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है. हाँ, और आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ वही एफर्ट के मुश्किल है बट मैंने करना है. लाइक आई वांट टू डू दिस फॉर माई कंट्री, बट आई थिंक ये भी शायद रियलाइज होता है, एंड द रीजन दैट इट्स हार्ड इज बिकॉज देयर आर सो मेनी बैरियर्स, राइट? यू आर जस्ट लाइक आई वांट टू डू दिस बट इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड. इट्स नॉट, you know, you can't just do it. No, there are, you know, innumerable barriers, and you know, we are still privileged. It is also a huge responsibility on us. Yeah, because of that privilege. Yes. कि उसको फिर हम extend करें, help out करें, और वही आपको काफ़ी दफ़ा रात को जगाता है. अगर आप कुछ पढ़ लें ख़बरों में, या कोई आपके, मेरे केस में कोई केस आ जाए, मेरे पास ऐसे काफ़ी मैंने केसेस ऑब्जर्व किए जो रैटल करके रख दिया है, और फिर आप बड़े यू नो गुस्सा भी होते हैं, समझ नहीं आता गुस्सा किस पे निकालें, वही सिस्टम पे ही निकालते हैं, या मगर सिस्टम इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ पीपल, एंड देन यू से कि नो चलो मैं ही एटलीस्ट कुछ कर लूँ, या मेरे से 2 हो जाए, 2 से 4 हो जाए. It's gonna take the people. Absolutely. Yeah. कोई तो करे. हाँ. But yeah, it's hard because you're just like, you know,
why do I have to fight the system? Why do I have to do it? But somebody has to do it. Somebody has to do it. So you are also leading the Women in Law Chapter. वो क्या है? वो एक community based initiative है जो कि fair representation of women in the legal professions के लिए काम करता है. और ये हमने एक खातून है लाहौर में निदा, उन्होंने शुरू किया था. मैं तो इस्लामाबाद का चैप्टर लीड करती हूँ, बट ये पूरी दुनिया में, इनफैक्ट मैं उस दिन ही पढ़ी थी, लॉ स्कूल्स में होता है या अदरवाइज़ जहाँ जहाँ ख़वातीन काम करें लीगल प्रोफेशन में हो रहा है, जहाँ उनको लगता है कि कोई एक सेगमेंट है सोसाइटी का जिसको उस तरह अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो कि लेट्स बी ऑनेस्ट नहीं है. दैट्स इज नॉट इन पाकिस्तान, इट्स एल्सवेयर आल्सो, बट आई एम ऑब्वियसली मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट पाकिस्तान. आई डोंट रियली केयर अबाउट अदर कंट्रीज, आई एम ऑनेस्ट, बिकॉज आई एम अ पाकिस्तानी, आई ओनली केयर अबाउट पाकिस्तान. तो उसलिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ताकि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन हो बार और बेंच पे. बाय बार आई मीन के हमारी बार एसोसिएशंस होती हैं और बेंच का मतलब होता है कि जजेस आएँ, क्योंकि जब आप ज़्यादा लोगों को डालते हैं डाइवर्स बैकग्राउंड्स के, वो आपके फिर डाइवर्सिटी भी आती है. आपके फिर जब आप डिसीजंस लेते हैं तो यू आर कीपिंग एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इन माइंड. Perspective is bigger. Absolutely. So that is it. सिर्फ डाइवर्सिटी के लिए, and that goes for all religions, sects, backgrounds, races, ethnicities. तो उसके लिए. So I think Women in Law is doing good work in that sense. That's nice to hear. एक प्रॉब्लम जो बहुत सारी ख़वातीन को इस प्रोफेशन में आता है वो ये होता है कि चलो दे डिड लॉ राइट, और बहुत सारों के लिए पहले ही आ जाता है, उनको फिर वो लॉ करने दिया ही नहीं जाता कि कचेरी में जाना है एंड लिविंग दैट टफ लाइफ. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? एक्चुअली पता है, वो अगर फियर्स हैं तो वो बिल्कुल बजा हैं, क्योंकि बैरियर्स हैं और वर्क एनवायरनमेंट बिल्कुल कंड्यूसिव नहीं है. वहाँ पे एक औरत कैसे जाके काम कर रही है? इसी तरह ये जो ऑर्गेनाइजेशंस या इनिशिएटिव्स हैं इसलिए काम करते हैं ताकि वो ख़वातीन के लिए एक बेहतर माहौल बना सकें, बट वो पुश कर सकते हैं. ये कलेक्टिव एफर्ट है जो हर किसी को मिलके करनी है, ख़वातीन को करनी है, आदमी को करनी है. दैट सेड, देयर हैव बीन वंडरफुल वुमेन हु वर्कड इन द कचेरी एंड आगे भी गए. दे हैव डन इट एंड दे हैव shattered the glass. I won't even say broken, but they've shattered the glass ceiling, and we've had excellent women lawyers. But that said, उनको बहुत मेहनत लगी है. It's not easy, so I'm not going to glorify it. एक औरत और एक मर्द को सेम सिचुएशन में डालें तो women have had to, was it much harder for them to do it? आप कचहरी के बाहर, उधर मेरा मेल काउंटर पार्ट हो, चाहे मैं उससे इक्वली कॉम्पिटेंट हूँ या ज़्यादा कॉम्पिटेंट हूँ, मैं फैमिली लॉ के हद तक मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे. क्योंकि वुमेन फैमिली, जैसे मेडिसिन में होता है कि दे वुड प्रेफर गायनोकोलॉजिस्ट्स मे बी, women gynecologists over men, या अगर ख़वातीन का सोचेंगे तो कहेंगे मे बी अ डर्मेटोलॉजिस्ट और अ गायनोकोलॉजिस्ट. एंड यहाँ ये कि बस फैमिली लॉ के लिए आ जाएंगे कि हाँ बस उसकी बात डिवोर्स की, मेंटेनेंस की, बच्चों की. ऐसी बात नहीं है. वुमेन आर डूइंग वेल इन क्रिमिनल लॉ, इन कॉर्पोरेट लॉ. इतने ज़्यादा एरियाज़ हैं प्रैक्टिस की. जो क्रिमिनल लॉ है, जो कि मेरी भी फील्ड है एक हद तक, उसमें इतने सरप्राइज होते हैं कि अगर ख़वातीन आ जाए. एंड आई नो अ फैंटास्टिक वुमेन, ठीक है ज़्यादा नहीं है, मगर जिन्होंने बहुत अच्छा किया और बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल लॉयर्स के आगे वो अपने केसेस जीती हैं. तो ऐसा नहीं है, बट ये माइंडसेट की बात है जो कि इंट्रेंच्ड है और वो चेंज हो रहा है. चाहे आहिस्ता चेंज हो रहा है, बट हो रहा है, बट उसको चेंज होने की ज़रूरत है. अब समझ आता है वो पहले से बहुत बेहतर हालात हो गए, बट अभी भी काफ़ी कोशिश की और मेहनत की ज़रूरत है. हाँ, चलो, आई होप, बिकॉज अ लॉट ऑफ वुमेन दे डोंट इवन लाइक, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज कहते हैं लॉ नहीं करना, बिकॉज कचेरी में ख्वार होना सेफ नहीं है, वो नहीं है, मतलब लॉट्स ऑफ कंसर्न्स पीपल हैव. बिल्कुल. मेरा थोड़ी सी एक शिकायत रहती है, जो मैंने काफ़ी मेल लॉयर्स की वो देखी है. वो कहते हैं वो अपनी घर की जो ख़वातीन हैं उनको इजाज़त नहीं देते या इनकरेज नहीं, इनकरेज नहीं करते कि वो लॉ करें, जो कि मुझे प्रॉब्लमैटिक लगता है. इसलिए क्योंकि ठीक है, उनको पता है कि लॉ के क्या इश्यूज हो रहे हैं, सही है, बिकॉज वो प्रोफेशन में ऑपरेट करते हैं. बट रादर देन टेलिंग द वुमेन टू नॉट डू लॉ, व्हाई नॉट प्ले योर पार्ट इन इम्प्रूविंग. आप एक बंदा भी कोशिश तो करें, आप एक बंदा, और अगर आपका
एक स्टैचर है, आपका You have the status है, say and the power. you have the say and the power, and Use you can. it. Yes, you can, and there are men who do it. In fact, हम ना, मेरे एक्सपीरियंस में मेरे जो बेस्ट मेंटोर्स रहे, एक होते हैं बॉसेस, एक होते हैं सुपरवाइजर्स, एक होते हैं मेंटोर्स. जो मेरे मेंटोर्स रहे, 2 ही हैं वो, हाँ 2 से 3 ही है वो, आदमी थे. तो ऐसे भी हैं, और वो जो है, और मैं ऐसे भी आदमियों को जानती हूँ जो कि जिनकी वाइफ्स लॉयर्स हैं, जिनकी बहनें लॉयर्स हैं, जिनकी वालदाएं लॉयर्स हैं, और ऐसी लॉयर कपल आपस में काफ़ी दे गेट मैरिड, व्हिच मेक्स सेंस बिकॉज दे वर्क टुगेदर एंड दे हैव द सेम प्रोफेशन एंड दे हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट. उसमें a lot of the times the woman is doing better than the man, which is fine. Which is completely fine. And हर किसी की different trajectory होती है. एक दिन आदमी अच्छा करेगा, and it's not a competition. It is teamwork at the end of the day. Treat it as teamwork and treat it as what you wouldn't want for yourself. Then don't want it for other people. If a man, in fact, if you have the chance and opportunity to make it better for the other person, then maybe do that. हम जैसे अपनी प्रिविलेज की बात करते हैं, हम नहीं चाहेंगे कि सर्टन चीज़ें हों, तो हम फिर दूसरी ख़वातीन के लिए या दूसरे आदमी हजरात के लिए, किसी के लिए क्यों ना बेहतर उसको करें. उसी तरह जिनके पास वो प्रिविलेज है, जिनके पास वो पावर है, उनको ज़रूर एक्सरसाइज करना चाहिए, रादर देन द इजी वे आउट. नहीं आप दूर हैं और इससे काम Yeah, because then you're becoming part of the problem in a way. You're becoming part of the, and you're furthering the problem. You're not doing anything. You're not utilizing your position, your knowledge, your power to make a change. Yeah. एंड मैं ये किताबी बातें लगती हैं सीमिंगली कि ओ मेक अ चेंज, बट आ जाता है अगर कोई मेहनत तो करे. Yeah, that's true. So you said something about working at the NAB. Yes. Okay, can you tell us about that? Yes, so that's my current job. मैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर हूँ. तो मैंने सोचा कि इससे पहले मैं क्रिमिनल लॉ की अपेलेट स्टेज पे यानी हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करती थी. तो फिर मैंने कहा चले व्हाई नॉट गिव वाइट कॉलर क्राइम अ शॉट, एंड दैट्स जस्ट वेरी पाकिस्तान में काफ़ी उसके हैं भी केसेस. तो I did that, and this was my first stint with the government. Yeah, so that's interesting also. I've had a varied experience, which sometimes I used to think, I've not stuck to one thing, and mera varied hai, but that varied experience has actually taught me a lot. Okay. Different areas of law का तो एक बात है, but otherwise also experience in places and places. Because I worked in law firms, I have worked now at the government. I've also done. I've also experienced the development sector, which is also very good. They're doing very good work. I've worked for mentally ill prisoners in the past, juveniles in the past. Okay. That is extremely important. And okay, so their addressing rights. the tab. Yes. Okay. That. वो थोड़ा सा on हमारे जो clients होते थे वो death row के होते थे. But keeping death row to one side, just the fact trying to make people understand कि mental illness भी कुछ होती है, और prisoners fake नहीं करते, और कुछ की genuine होती just to get acquittal or a reduction in sentence. So reasoning and making the relevant authorities understand. That is also the organization that I worked for, has been around for a decade now. तो वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने जिस तरह again they kept at it, तो उन्होंने भी चेंज लाया. वो जुडिशरी को भी ट्रेनिंग देते थे, पुलिस को भी देते थे, जेल अथॉरिटीज़ को. तो अब ये समझ आ गई कि जी वो होते हैं. In fact, we had our first case, a seminal case in the Supreme Court, where 3 prisoners who were on death row got off the death row. उनका सेंटेंस कम्यूट हो गया था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे हो गया था, 2 का एटलीस्ट, और वो स्किज़ोफ्रेनिक थे. एंड सुप्रीम कोर्ट ने इतना टाइम लगाया और इतने तहम्मुल से समझा कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, इनको कैसे अप्लाई किया. उन्होंने मेडिकल एक्सपर्ट बुलाए, उन्होंने लीगल एक्सपर्ट्स बुलाए, बारिंग जो लॉयर्स दोनों साइड्स के थे. और फिर उसको इवेल्युएट किया, और फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी देखा. तो that's a big step. That is a big step. So this happened last year, which is huge for Pakistan. Yes, we are a little late. मतलब इंडिया में ये 2015 में हो चुका था. अमेरिका में भी, खैर अमेरिका and all, they've been around for a very long time, yet they've been late with many things. Let me just that's true. By the way, our growth is much more accelerated. Accelerated. तो उनके और अभी भी उनके वो issues हैं जो कि होने नहीं चाहिए for a country that's so massive.
rich and who's been around for a very long time, but खैर that's another debate. Yeah. But वही तो हो जाता है. तो मुझे सुप्रीम कोर्ट में बड़ी I was very happy कि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से समझा, बड़ी अच्छी judgment दी उसकी. That's very interesting. Yeah. So you were basically saying that you worked in different Yes. with Varied experiences. आपका ये government के साथ हुआ, then you did this. Yeah. So what was this basically? Is this an association or some kind of union? Like, how do you work on, like, or does it happen case by case? Like, how do you work on the rights of prisoners? So rights of prisoners का ये था, the organization that I worked for, वो अपने आप को pro bono law firm कहते हैं. Okay. तो वो जो है, in common parlance people would say NGO, right? But it is a proper law firm, pro bono, but क्योंकि they operate on डोनर्स एंड ऑल. तो उसमें ये होता था कि जो हमारे पास केसेस पता चलते थे और हमें लगता था कि ठीक है इसकी मेंटल इलनेस है, और चूँकि वो बैक्ड बाय लॉ है कि आप एक मेंटली इल जो प्रिजनर है या इनमेट है या जो भी बंदा कन्विक्ट हुआ, अगर वो उसकी मेंटल इलनेस प्रूव हो जाती तो उसको आप डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते. सेम गोज फॉर जुवेनाइल्स एज वेल. वी ऑल्सो fought for about 43 Pakistani prisoners who were imprisoned in Sri Lanka for various drug crimes. तो वो जो लेकर, and they were guilty, some pleaded guilty, वो उनका सारा था, but law ये दोनों countries के बीच में agreement था कि वो वापस repatriate हो सकते थे. तो the organization played a very major role with the overseas department to get them repatriated ताकि पाकिस्तानी law उन पे लागू हो. वो फिर आए, फिर उनके cases चले, और फिर उन्होंने हाई कोर्ट ने फाइनली फैसला दिया कि एक्चुअली उन्होंने अपने सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए तो उनको रिलीज किया जाए. उसमें भी it was nothing comes easy. It was a struggle, dates after dates, making them understand कि जी पाकिस्तानी law अब अप्लाई होती है इन पे क्योंकि ये वापस आ चुके हैं as per the agreement between the two countries, and then of course the jail authorities were there. तो वो था, but बहुत लंबे पीरियड के बाद जब रिजल्ट आता है, एज ए से पेशेंस बेयर्स गुड फ्रूट, तो वो बहुत अच्छा फील रिवॉर्डिंग होगा, बहुत रिवॉर्डिंग होता है. दैट्स इट. काफ़ी बुरे दिन भी होते हैं कोर्ट में, आपको डांट भी बड़ी पड़ती है, जो कि सही है. आप अगर डांटे ना तो नहीं होता. मेरा पहला केस था, एंड हम हमेशा चाहते हैं कि पहले केस में हमें एक्विटल मिल जाए. तो मुझे एक्विटल बिल्कुल नहीं मिला. इनफैक्ट मुझे जो जज साहब थे, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, उन्होंने मुझे बताया भी कि मैं कहाँ गलत थी, और उन्होंने कहा मैं आई वॉज पुशिंग फॉर अ केस, तो उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि ही डज नॉट एग्री विद द केस, विच इज़ वेरी नाइस ऑफ हिम, बिकॉज लॉट ऑफ देम they're not bound to say that. तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं. But then दूसरे केस में I did get an acquittal, which was a very emotional moment for me because of course मैं basically high court में उन लोगों के केसेस आर्ग्यू करती थी जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते लॉयर्स. तो यूज्ड टू डू इट प्रो बोनो, एंड हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया था. तो जिसका पहला जो मुझे एक्विटल मिला था वो ऑब्वियसली गरीब लड़का था, और वो उसका केस बन नहीं रहा था, और उसका एक्विट हो गया था. और उसने इवन तो अपना जब मैंने आर्ग्यूमेंट्स कर ली, उसकी वालदा थी कोर्ट में, वो तो खुद जेल में था. तो उसकी वालदा ने मुझे अब जाहिर है वो शी इज़ नॉट अ लॉयर, तो उनको तो नहीं इतना समझ आया था, बट उनको शायद जजेस ने सवाल नहीं पूछा, या दे सीम टू अग्री विद मी, आई डोंट नो व्हाट इट वाज. मे बी शी वाज ऑब्जर्विंग द बॉडी लैंग्वेज व्हेन आई गॉट आउट. सो शी पैटेड मी ऑन द बैक, एंड आई सेड नहीं आप देखें अभी फैसला में आया नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है. तो कहेंगे आपको क्या लगता है. तो मैंने कहा कि स्ट्रिक्ट है, ड्रग्स का केस था वो, तो मैंने कहा कि ज़्यादा सेंटेंस मुझे लगता है रिड्यूस होगा. मैं चाहती तो एक्विटल हूँ, मैंने कोशिश पूरी एक्विटल की है. खैर हर कोर्ट में ना एक बार रूम होता है, तो वहाँ हम मुझे लेके गई. she wanted me to have tea or eat something, and मैंने कहा नहीं देखें कोई ज़रूरत नहीं है तकल्लुफ़ात के लिए. I went there and we sat down. So she was insistent, and I said you should order something for yourself also. She was a bit hesitant. तो मुझे थोड़ी सी समझ आ गई, so I said no you should. And then when the bill came, she did not have sufficient money, and that was just a very it was a very emotional moment for me. And I said no, don't worry about it, because I understood her pain. She wanted to, because I wasn't taking any money. She thought this is this person who's fought my son's case, right. And
how can I thank her, right? Because every normal human being would want to do that, right? She wanted to, but she did not have the resources, which is, even if she'd said, even agar wo kuch kehti bhi na, it would have been completely fine, but she was a kind person. So she said, no, she insisted that I must have something. But it's all about the heart, right? Yeah. She didn't have the means and the resources, but she still, said, and that was very emotional. And I said, okay, kuch ho jaye. And then I remember I was somewhere else, उसकी judgment आनी थी, तो वो बाद में आपको order की copy मिल जाती है, तो थोड़ी सी होती है कि आपका क्या result आया. तो before I could get hands onto that, onto the copy of the order, she called me and she said, मेरा बेटा रिहा हो गया. And that was just a beautiful moment. And then his wife had also left him बीच में, because मुझे goosebumps हो रहे. Yeah, I know. I had tears in my eyes, because even though monetarily I didn't gain anything, which is completely fine. But it's the impact, right? It's the what impact. You did. Yeah. And then I said to him कि अब आप जाएं उसकी बीवी को मना के वापस लेकर. I gave my unsolicited advice regarding that also. But that was, and that will always stick to me. Not because I got an acquittal, but because the little things. The little things. These moments. I still remember how she took me to the bar room, how she ordered. It's, it's like, मतलब मेरे जहन में छपा हुआ है. हाँ. And I think पता है ये वाली जो moments और चीज़ें होती हैं ना, these are the ones that help you stay consistent in the future. Very important. They keep you going. कि नहीं, I will keep doing this. I will keep doing this, because it's weird, but I don't know. Humans are like this. Yeah. Money, ठीक है, for a lot of people it does do that. And it is important. It's important. I'm not saying कि मतलब हम कोई हमें charity है work करें, but I'm just saying that these things, they give you a bigger and better drive than money absolutely. does. आप अच्छी फीस ले लेना केस में, you'll go splurge, you'll buy something. You'll be happy, sure. You will be happy क्यों, बड़ी अच्छी But the fulfillment. Yeah, you would remember that fees so much in the longer run, but this is something I will always remember. Yeah. I get it. Yeah. So the feeling of creating an impact, those moments, they help you keep doing and showing up and showing up. Absolutely. Yeah. So let's talk a bit about, we have to end in a bit, but I want to talk to you a bit about your work in women's law, women's rights. How do you feel about that? What has your experience been in Pakistan about that? Okay, so I think everyone knows where Pakistan ranks and how well Pakistan is doing. Yeah. Unfortunately, I do not have to go into that. It's very unfortunate. And when you see other countries that you don't expect to be doing better, it's pinching, but that's the truth. They are doing better in some ways. And I think it's zaruri hota hai to keep yourself in check, so you know how well you're faring, because jab international indicators तो ज़ाहिर इसी चीज़ों को देखेंगे. I think बहुत काम करने की ज़रूरत है, but the good thing is हो भी रहा है काम. मैं हमेशा ये कहती हूँ, चाहे जो भी चीज़ हो जाए, आई थिंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि माइंड सेट हर चीज़ में, लॉ के बारे में सिर्फ नहीं है, अदरवाइज भी माइंड सेट चेंज होने की ज़रूरत है काफ़ी चीज़ों की, जो कि हो भी रहा है. आप कभी यू read very endearing news as well, especially coming from far-flung areas, जो कि बहुत अच्छी बात है कि कैसे एक बाप जो है बहुत मुश्किलों से अपनी साइकिल लेके जाता है बच्चियों को पढ़ाने के लिए, और ये उन एरियाज़ में जहाँ बच्चियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था पहले. अब मेरा ख्याल है अवेयरनेस आ रही है. देयर आर कपल ऑफ फैक्टर्स फॉर इट, सोशल मीडिया, लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि ख़वातीन को अपने हुकूक के बारे में पता हो. नाउ देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु रीच आउट टू मी फॉर देयर मैरिटल राइट्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या जो उनके गार्डियनशिप के होते हैं, अगर कस्टडी के अगर उनकी शादी नहीं चलती और उनके क्या है. एंड अ लॉट ऑफ वुमेन, विच इज़ ग्रेट टू नो, have started reading the Nikahnaama, which is very important. And this is across all strata. मैं ये नहीं कहूँगी कि एक certain class में होता है कि नहीं पढ़ते, नहीं, वो काफ़ी which is why I'm saying the mindset. Though that said, it's more so disappointing coming from a mindset that is educated, has exposure, and is privileged. Jugnoo, it does. It does. This is something that I have really understood, that you can have
all the education, you can have all the money, you can be part of the most upper middle Yes. or above that sort of Yes. crowd, and then there are people and families who still hold the same mindsets, who Yes. still hold the same values. Absolutely. What's the point of going on so many vacations or even studying abroad or living abroad if you can't learn or take or understand basic human rights? And there are a lot of countries that are doing well in basic In human fact, rights. Jugnoo, this अगर आप education की चलें, एक चीज़ है, आप women की their choice to work even आप देखिए in some of the most elite homes, those women, they're just like, we have enough money, you don't have to work. And those women, they're watching dramas all day. They're buying lots of, they have a lot of money to sit and buy. They have a lot of money to throw kitty parties and go to kitty parties. But they're literally from the start never really encouraged or allowed to work. Yes. So they're like, you have all the money, have fun, but that's it. Yes, exactly. Don't dream. Yes, don't dream. Yeah. And that's such a problematic mindset because yes, money is the compensation that you get for working, but you don't necessarily work for money. Even if you're the richest person. It's basic productivity and just growth. Yes, exactly. Individuality, identity. Identity. A lot of people do pro bono work. A lot of people do social work. They are doing because they want to work. You only don't step outside to work because you have to earn money. Yeah. Yes, it is a huge motivating factor, especially for those जिनको पैसे तो हर किसी को चाहिए होते, but for those who really have to make ends meet and बहुत ज़रूर and बिल्कुल पैसे मैं यहाँ unfortunately हर profession में पाकिस्तान में ये भी बड़ा जो जिस चीज़ को condemn करना चाहिए exploitative practices होती हैं, शुरू में आपको पैसे नहीं देते या कम देते हैं, and people have households to run. वो एक अलग बात है, but ये relate करना कि आपके पास पैसे तो आपको काम करने की जरूरत क्या है भाई, काम पैसों से रिलेटेड नहीं है. तो ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक है. और इजाजत देना और नहीं देना, आप एक सेट ऑफ राइट्स के साथ पैदा होते हैं इस दुनिया में. आप एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अप्लाइज टू यू. Whether you are a man, a woman, basically a you child. are born with your rights. Yes. When you are a human, there are certain rights you have, and there is nobody in the world who has the right to give you that right. Yes, exactly. आप just ethnicity, religion, doesn't matter regardless of everything, age, background, everything, gender. Those rights apply to you. And yes, state की responsibility होती है to give you the rights. वो एक अलग debate है कि वो होता है या नहीं होता. मगर to say कि यहाँ के नहीं, आपको ये नहीं है, आपको वो नहीं, आप बिल्कुल मशवरा दे सकते हैं, बट आपने बिल्कुल सही कहा, काफ़ी लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं. एंड आई फील वेरी सैड फॉर दोज पीपल. आई फील बैड एक्चुअली, बिकॉज इवन इफ दे हैव they can afford to buy everything, they can afford to take wonderful vacations, but they're not able to do what they want to do because इजाज़त नहीं है. और ये होता है, एंड उनके लिए भी लोग कहते हैं उनको क्या ज़रूरत है, उनके पास तो पैसे, उनके हकूक़ के क्यों लड़ रहे हैं. भाई हकूक़ पैसों से तो नहीं होते ना, हकूक़ तो हर किसी के लिए होते हैं. अगर कहीं एक बहुत अमीर बंदे के हकूक़ का भी हो सकता है डिप्राइव हो सकता है, गरीब बंदा भी डिप्राइव हो सकता है हकूक़ के. तो आपने तो हर किसी को किसी की गरीबी या अमारत देख के तो नहीं हकूक़ का करना ना. आपने तो वैसे ही हकूक़ देने ताकि हर इंडिविजुअल, हर सिटीजन को मिले. और हक जो है वो इक्वल होता है. हक इक्वल होता है, हक इक्वल होता है. Which reminds me of this thing कि ये ना एटलीस्ट हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा चीज़ है कि अगर एक गरीब आदमी एक अमीर आदमी का कोई हक मारता है, सो आई नो कि सिस्टम में देयर इज़ अ लॉट ऑफ दिस के द राइट्स आर नॉट इक्वल फॉर the justice system is not equal for the poor and the rich, which is a conversation on its own, and yes, I agree, but a lot of times हमारे मुल्क में people who are rich or better off, या if for example उनके घर में रॉबरी होती है, कुछ होता है, वो गरीब आदमी ने किया, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है वो गरीब है, खैर है, बट गलत है. हक तो चाहे वो इंसान रिच है और आपने उसके बैग से शायद सिर्फ 10 रुपए भी निकालने हैं, गलत है. और उस चीज़ का उससे जस्टिस मिलना चाहिए. जस्टिस इज फॉर ऑल एंड जस्टिस इज इक्वल फॉर ऑल, वेदर यू आर रिच, वेदर यू आर पुअर. सो वो दोनों में वो एक अजीब होता है, लाइक यू टेल द पीपल हु आर बेटर ऑफ टू let it go because they're like this. But the thing with अगर एक रिच इंसान भी है ना, उसके अगर थोड़े से पैसे गए हैं, शायद उसके लिए वो मॉनेटरी लॉस इतना बिग डील नहीं है, बट जस्ट द फीलिंग ना कि जब आपको जस्टिस नहीं मिलती और आपको आपका हक नहीं मिलता,
it's really bad. It is. And Because that is the haq problem in hai. Pakistan. Yeah, Yes. because justice is justice. Like you know, you can't, no matter what it is, it's just whenever somebody steps on your right, it's not a good feeling. Yes, it's just not a good thing. feeling. Yeah. And वो कोई भी हो सकता है. काफ़ी दफ़ा आपकी फैमिली मेम्बर्स होती हैं. Doesn't have to be an outsider. Yes. आपके वो होते हैं. I mean, come on, we live in a country जहाँ honor killing होती है. And वो सबसे ज़्यादा perpetrators जो होते हैं, they're known to the victim. Yes. And the same goes for sexual abuse जो Yes. बच्चों के साथ होता है. Yes, और या घर में ही लोग otherwise होते हैं और हाँ. बिल्कुल. या रेप होता है या सारा कुछ. तो आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि जस्ट बिकॉज कि हाँ अमीर है जाने दो, इस तरह तो नहीं. या भाई है जाने दो, या फलाने जाने दो. भाई ने इधर गोली मार दी, लेकिन जाने दो. और जो कि होता है कि जी सुलह सफाई हो गई है, वो भाई है तो वो तैश में आ गया था, तो उसने अपनी वतनी बहन की तस्वीरें देख ली तो उसने कहा मार दे. तो उसने डिसाइड किया कि वो जस्टिस अपने हाथ में ले ले, और उसने कहा ओ मेरी गैरत पे बहुत फर्क पड़ा है तो मैं मार दूं. मतलब गैरत इज दिस एंड किलिंग समबडी, दैट इज अनइमेजिनेबल. मतलब यू इवन इफ यू हर्ट समबडी, हमें तो ये सिखाया जाता है कि दैट अलोन, इफ यू accidentally hurt somebody, that's also bad. If you intentionally hurt somebody, that is a no-go zone, right? Yeah. You should not do that, even if that person's wronged you. Yeah. बहुत दिल चाहता है कुछ, but you're like, oh, be the bigger person, be forgiving and all. Yeah, तो we're talking about murder. Yeah. And a lot of times people do let go. I'm not saying that they don't, and they do, and they feel okay about it. But it's just that it's not right. It's about principles, It's right? about And those are like principles, yes. really big issues. मैंने तो एक बहुत छोटी एग्जांपल दी थी. आपने तो कहा कि ये तो इतनी बड़ी एग्जांपल्स में भी ये होता है कि वो एग्जैक्टली क्या होता है. तो प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, बट मेहनत देखें, कोई भी ओवरनाइट चेंज नहीं हुआ. अगर आप सोसाइटी से पकड़े हो तो आई एम टॉकिंग अबाउट द successful or relatively successful countries and societies, one must learn from them. And ये हर किसी का, this is not just the state's responsibility, it is every individual's responsibility. आप अपने आप से शुरू करेंगे, and then we make up the state, right? It's going to be people like you and I or other people who are going to be governing the country maybe one day, who knows. और आप part of the country. और आप अपनी capacity में तो कर सकते हैं ना. मतलब आप ये कोशिश करें कि आप सिग्नल ना तोड़ें. Yes. आप जो हैं ये, अगर आपने 100 रुपए देख ली, कुछ पैसे देख लिए, तो भाई जिसके गिरे उसको वापस कर दें. किसी का दिल ना दुखाए. मल्टीपल अदर थिंग्स, अनलॉफुल चीज़ें से परहेज करें. तो is there anything else you would like to add or say before I wrap this up? I would have liked to have more. I think we would have very interesting, very nice conversation. I think we would have kept talking. Yes. That's the problem with podcasts, because setting is tarah hoti hai, and it gets very comfortable. It gets very comfortable and you keep talking. So I think there's one should stop talking at by a certain time. Or no, but just generally, I think I'm very happy to see that a lot of people and women are opting for law, and I would just say stick to it. बहुत मुश्किल है. I know I'm not going to glorify it कि आसान है and सारा कुछ, and आप उठें and change the world and overnight हो जाएगा. But if that's, and this goes for everything, if it's something that you truly want, you figure a way out. And I also believe हमना कि yes, destiny बहुत एक important concept है. मैं believe करती हूँ उसमें. But in certain things, if not everything was not possible also. In certain things, you shape your destiny too. Yeah. So at least try. बेशक बाद में होता है, but you don't have that guilt कि ओ काश में ये कर लेती, या काश में वो कर लेता, या काश में ये कह देती, या वो कर लेती. What I'm getting is that at least the factors that are within your control, control them. Try to control them. Because a lot of people just like कर भी सकते हैं लेकिन नहीं करना. और पता है जिंदगी of course it's you journey through crests and troughs, right? तो वो किसी की भी जिंदगी simple और इस तरह नहीं होती. हर किसी की trials and tribulations होती हैं for different sort. To assume कि नहीं, हम काफ़ी दफ़ा I think social media वो थोड़ा सा foster करता है इस तरह की feelings. It gets to you. It's very normal कि oh this person's living a very good life, and especially when you're going through a bad then time. You start comparing. But you don't know. That's for the media, right? We're getting that's for the gram or something. I don't know the term now. But
that's with the media. It's a highlight reel, they say. Yes. Oh yeah, okay. Yeah. I did not know about that. Thank you. But पीछे आपको नहीं पता होता, और just because उसने आप जैसे टेस्ट्स नहीं गुजारे ज़िंदगी में, उसका ये मतलब है कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं रही या उसके कोई टेस्ट्स ही नहीं आए. हर किसी के कुछ के फाइनेंसेस का होता है, कुछ का लॉस ऑफ लव्ड वंस का होता है, कुछ का हेल्थ का होता है. देयर आर सो मेनी रीजंस. बट जस्ट एट लीस्ट कीप गोइंग. एंड आई ऑफन व्हेन आई फील डाउन, आई like to read about people who have done it all or have tried. They've actually been very persistent with their efforts despite facing setbacks. And I wonder, ek to hum kehte hain हाँ ठीक है whatever, but when you start reading about them, आप सोचते हैं my God, I would have given up. But then after reading about them, you realize कि no, they were successful the 10th time or the 11th time, so no, don't give up. It wasn't like this for them. It wasn't like this. It was like this, like this, and then maybe like this. और उसमें भी वो यूं ही था. Exactly. और हमें लगता है कि ये था भाई, सारी तो जिंदगी के अजाब और दुख और मसले तो हमारे पर आके ऐसा कभी भी नहीं होता. That's so true. और अगर honestly, like you said, आपको एक highlight reel नजर आ रही है किसी की भी, the fact is कि हो सकता है कि किसी की life, let's assume perfect है. Perfect. अगर है भी. Right, है भी, right? तो it's not their fault. right? Like नहीं हुए टेस्ट, so eventually होंगे जो भी होगा. But the fact is you can't live your life in this bitter misery of comparison. Yes. And to wish कि इसको तो क्या पता जिंदगी के बारे में क्योंकि इसके टेस्ट नहीं है. No, actually ठीक है, जब आप एक्सपीरियंस करते हैं कुछ तो आप बहुत सीखते हैं, बट अ लॉट ऑफ द टाइम्स यू डू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स एक्सपीरियंस. नेवर डिस्काउंट के दिस पर्सन's नॉट गॉन थ्रू इट और हैज नेवर बिन इन माई शूज, देयरफॉर दे वुडंट नो. नॉट एट ऑल. आपको क्या पता, दे मे हैव बिन इन योर शूज बिफोर, या उन्होंने कोई लव्ड वन देखा हो बड़े क्लोजली. अजम्पशंस जो हमारी हैं, देन द सैड पार्ट इज दैट वी स्टार्ट out of bitterness, we start wishing, inadvertently wishing, कि इसका तो कुछ नहीं है, how would she know or how would he know? Not at all. And हर किसी की trajectory different होती है, हर किसी के tests different times पे आते हैं. अगर नहीं भी आते तो so what, focus on your life. और कोई लेके अपने boards नहीं फिर रहा ना साथ साथ रो रहा, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, अब मैं खुश हूँ. Exactly. और अपनी अच्छी चीज़ों पे focus करें, because that's what's going to keep you going. अगर आप दुख पे पड़े रहे तो फिर तो you are done for. You really are done for. It's basically victim mentality that everything happens to me. Yeah. And honestly, anybody can live like that. Even people with the smallest of trials, if that's their mindset, they will live like, oh my God, everything bad happens to me. But that's what they're like focusing on. And then there are people who've actually been through a lot and they're just like, they're not even thinking about the fact that ये मेरे साथ ये ज़्यादती हुई थी और हुआ था. They've done it and they've healed and they've moved on. And even actually even some people, even when they're in those circumstances, when it is happening to them, they don't look at it so much like that. Not at all. And they're so in control of themselves. And I am in awe of such people. Not glorifying it again. अगर जो जिनका लग रहा होता है वो भी समझ आता है, because we are human beings at the end of the day. But people who still push themselves and go about their lives, wonderful. Wonderful. Thank you so much for this very insightful thank you very profound thoughts. I'm so glad that I called you here and that you wanted to come as well. This definitely adds to like really adds a lot of value to the podcast listeners. Thank you so much. No, thank you for sparing time and having me on your show. Thank you so much for tuning into this episode. I hope that you are able to gain some insight from this. I mean, I'm pretty sure that you actually will. We haven't, like I said, we haven't had a lawyer here before, तो बहुत सारी चीज़ें, and honestly I don't even know a lot of lawyers in my personal capacity, so मेरे लिए it was very interesting to have a conversation with someone like that. And I think that's what I love about this work that I do, because I get to talk to all kinds of people with all kinds of things. Really broadens my horizon. So I hope the same for you, and thank you so much. Don't forget to like, subscribe and leave comments about your thoughts, and I'll see you again next time. Allah Hafiz.